How are you? So there will be more students joining. Okay, we will wait till 6:05. Sorry, 4:05, and then I'll start. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Suman. How are you? I'm fine. Okay, law of variable proportion. Previous class में मैं तुमको कितना insights देती बोलते? Who will tell me what is the law of variable proportion? What is law of variable proportion? Law of variable proportion कौन? पोड़ी खाई जाऊँ सबू? सब पोड़ी खाई जाऊँ? एपटे गाने पुरुष सेपटे गाने बाहर कर दूँ? ना कौन चलची? मैम वो प्रीवियस क्लास करे नथिली कौन law of variable proportion class रे तू थिलु? करे नथिलु कौन? नथिली मैम बोधे ସେଦିନ ତୁ ଛତୁଆ ଖାଇ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ତୁ ଥିଲୁ law of variable proportion class ରେ? Okay, now law of variable proportion रो आउथरे स्टार्ट करिबा समस्ते attentively सुनो बुझो आ मने रखो पोड़ी की खाई जाओ ना एग्जाम बेलू कोन ना मैडम किछ पढ़े ना हम सब पोड़ी खाई जाइछो सेतळो कहले हम टोटल सुनिबी ओके now what is law of variable proportion? Law of variable proportion states that as we increase quantity of only one output keeping other factor fixed, total product initially will increase at an increasing rate, then at a decreasing rate and finally at a negative rate. Suman tu आर क्लास रे नथिले भी मु मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जते पढौथिली सेतळे से क्लास रे मु कहिछि what is law of variable proportion कहनी कोन
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज स्टेटिंग ए लॉ हमको एटा स्टेट करूची जे जते बेले हमें फिक्स फैक्टर को फिक्स रखुचे आ गोटे वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करी जाउचे सेबे हम आउटपुट फर्स्ट इंक्रीजिंग रेट रे आसीबो देन गोटे डिमिनिशिंग रेट रे आसीबो तापरे आउ टोटल डिक्रीजिंग रेट रे जिवो आउ बढ़िबो नाही एग्जांपल देइथिली मु फैक्ट्री रो चॉकलेट रो आउटपुट रो पोड़ी खाइ जेचो 500 कर दोजो सब ना क्लास परे मैडम किए इकोनॉमिक्स किए मु किए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तमरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ताको भल से बुझ पढ़ देख क्लास पर भी ताको बुझ निज वर्ड्स रे लिखिया को चेष्टा करो try to explain it with the examples. Okay, now example देखो a landlord has 1 acre of land. He uses labor 1 person, seed 10 kg, manure 5 bags, result is 10 bags of wheat. Okay, now when he increases the unit of labor is increased to 5 and seed is increased to 50 kg, manure is increased to 5 bags and your result is 20 bags of wheat. When the labor is increased to 10%, seed is increased to 20 kg, manure is increased to 20 bags, the result is 3 bags of wheat. Now, in law of variable proportion, what does it say? It say keeping the land constant. Eti tamara land type fixed factor na variable factor? Ma'am, fixed factor. Keeping the fixed factor constant and increasing the variable factors will only lead to total product will initially start at increasing rate, then at a decreasing rate and then at a negative rate. First जेतेबेले गोटे एकर ऑफ लैंड कांस्टेंट अछि हम सेतरे लेबर अधिका पुट कले सीड अधिका पुट कले मैनर अधिका पुट कले से हमको रिजल्ट 20 बैग्स ऑफ व्हीट देला जेतेबेले हमें आहुरी अधिका वेरिएबल इनपुट देई चलले सेतेबेले हमको आउटपुट आउ किछि मिलिला नाही. The output has turned into a negative output. Why? Because law of variable proportion states that keeping a gote factor constant, increasing all other factors will only lead us to this condition. Bujha asila? Yes, ma'am. We can see as he is keeping we can see he is keeping land bracket of fixed factor constant. He is increasing the other inputs. Output at first keeps on increasing 10 ru 20 bag of wheat hela. Then and it keeps on increasing, but after some time when these inputs are optimum jetebele gote optimum level parjanta ame pahunchiba tapore it starts to decrease and the seeds become overcrowded, manure is abundant and the chemicals eat into output. गोटे machine जदी गोटे machine जदी भल से produce करी की 5टा output दोची एटा visible तो गोटे machine जदी हमको भल से हमें यूज करले से हमको 50टा 5टा आउटपुट देना यू माने ओ लिखि रे 50 माने ओ माने आउटपुट आई हैव रिटन एज ओ हमको जदी बहुत ताको क्यू करबी 5टा आउटपुट दोची देन हमें जदी ताको किछटा हमें गोटे मशीन रे 2टा लेबर यूज करके हमें 5टा आउटपुट पाउचे जदी मु ताको 3टा लेबर कर देबी से मते 10टा आउटपुट देई पाए किंतु जदी मु एठी ताको लेबर को एठी मु इंक्रीज कर देबी 10टा को से मते 2टा आउटपुट दबो इंक्रीजिंग रेट रे बढ़िला तापरे डिक्रीजिंग रेट रे कमी गला देखा होची तो केमती बढ़ुची कमुची कोन पे बढ़िला कमिला गोटे मशीन ऑप्टिमम लेवल पर्यंत यूज हे की गला ता परे जेबे हमें ताको कहबा जे तू आउरी काम कर इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग सेतबेले हमको डिक्रीज होबा स्टार्ट होबो हमें नेगेटिव जोन रे जीवा सेतबेले वी विल गो इनटू द थर्ड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दैट इज योर नेगेटिव जोन. ओके दैट इज अ नेगेटिव स्टेज बिकॉज़ एठी हमें 10 टा लेबर हायर करछे हमें आउटपुट पाओ कि न पाओ वी विल नीड टू एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू गिव देम वेजेस. कंपनी एठी खाली वेज दे चलीबो प्रोडक्शन किछि आनिबोनी प्रॉफिट किछि आनिबोनी को निजो पॉकेट रो देबो की विल इट गिव इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट? No, ma'am. So that's why we will go into the loss stage. That is your negative stage of law of variable proportion. Okay, just give me a moment. I need to bring the dust. Okay. So एथरे किछि डाउट concept law of variable proportion रो concept रे किछि डाउट? No, ma'am. एटा आरथर भी तमे बुझतलो पडी खाइ जाइछ आरथर भी नो मैं कहिलो एबे यस ना आसलेडी
Okay. Now a example ta dekho. This I give a illustration on this. First a table ta ko mark karo. TP केमिति अर्थरा हेल. Okay, the first stage is the law of increasing returns. Okay, now why it is law of increasing returns? Okay, it is the stage of increasing returns. Returns माने कौन? Return माने जड़ा फेरी पहले. Output. Return माने output. किए रे जड़ा कहला मते बे? Output और profit में तेरे difference कौन? What is the difference between output and the profit? मैम आउटपुट रु जति कॉस्ट हमें कॉस्ट ऑफ वेरिएबल जति देइचे सेति माइनस कर देले सेटा होची प्रॉफिट. तो आउटपुट के कहला? नो मैम. Return is your profit, only profit. Return is termed as profit, no output. Output is different than profit. It's profit only. Okay, return is your profit. In the first stage, read the first stage, Suman. Suman, are you there? Okay, Supriya, read the first stage. Nobody is there. Are you guys listening to me or are you guys sleeping? Soipur lagi rahe? Yes ma'am. Soipur? Okay, in the first stage is the first stage of increasing returns. It is the stage of increasing profit, as here in this stage till the time AP of the firm rises, the firm earns profit. Okay, jette bele AP बढ़ुची हमको profit हबो. Average of the product body ले ता माने हमको profit होची. When AP is increasing, we are earning profit. Okay, as in the time till the time of AP of the firm rises, the firm earns profit because an increase in AP shows an increase in profit. The first stage is from 1 labor to 6 labor. Separate jota achi amaro. Okay, your first stage is from 1 labor to 6 labor. Okay, 1 to 6. That is 8 to 78. AP is your 8 to 13 and MP is your 8 to 13. Okay, now this is the first stage because an increase in AP shows us indicates the increase in the profit. In the first stage, we will look upon to AP, average product. Ei jinsada body le mo bepara badhuchi matte profit hochi, so we will look upon to AP. Okay, now we look to AP because in AP of the farm rises till 13. Now see AP 13 रे rise करची 6 labor रा AP कितने अच्छी? What is the AP in 6 units of labor? 13. 13. Now 13 is the maximum stage that AP has gone up to. 13 टा होची हमारे maximum now. AP जो बॉडी के आसची 13 is your at maximum stage. तापर को बॉडी ची तापर को बॉडी ची बोले देखा रहा तुम समझ. No ma'am, कमीची. Okay. Now AP हमें देखिवा first stage of increasing return रे basic रे दीटा कथा आगे बुझो. First stage of increasing return रे जेबे AP बढ़ुची हमको profit होची. So in the first stage we are going to look at your AP, that is your average product. Now in this table the AP has reached its to optimum केते maximum केते पहुंची 13. Now after 13 the things have started to change. Okay, now after 13 ପରେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା ସେମ୍ ଅଛି? ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି. Beyond 4L को देखो, एबे 4 यूनिट ऑफ लेबर को देखो.
ठीक अछि हमर 4 यूनिट्स ऑफ लेबर रे हमर टीपी टा बढ़ी छि एट एन डिमिनिशिंग रेट टीपी टा हमर बढ़ी छि वेयर इज अ टीपी 48 ରୁ 65 ହେଇଛି 65 ରୁ 78 ହେଇଛି 84 ହେଇଛି डिमिनिशिंग रेट रे बढ़ुची बट एते भी बढ़ुनी दैट इज नॉट डिमिनिशिंग रेट माने कोन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिमिनिशिंग रेट मैम अल्प अल्प बढ़िबा माने बढ़ुथिबो किंतु एते भी बढ़ु नथिबो बढ़ुथिबो बट डिमिनिशिंग डज नॉट मीन कि इट्स कंप्लीट लॉस ओके डिमिनिशिंग रेट मींस बढ़िबो बट एते भी न बढ़िबा बळिया ओके बढ़ुथिबो बट एते भी नहीं मोर प्रॉफिट होच बट एते भी नहीं तो एते भी नहीं रे बिजनेस करबाटा इज ओके समटाइम्स एक्सेप्टेबल तो हमरो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कोन कहूची फर्स्ट व्हेन द फिक्स्ड फैक्टर इज फिक्स्ड एंड अदर फैक्टर्स वी कीप ऑन एडिंग it will go on increasing rate then on diminishing rate then on negative stage okay now 4l रे देखो 4 units of labor रे देखो हमरो टीपी टा बढ़ुची your TP is increasing at a diminishing rate and MP is falling हमरो MP कमुची हमरो 4 unit of labor रे 48 अछि हमरो TP and MP is 18 now MP has started to fall तापर परे कमुची ना बड़ी बड़ी चलची MP Kamuchi and now this point is known as your point of inflection okay এই जो point है जते बेले TP बढ़िला MP कमिला जते बेले हमर AP maximum है कि reach करी गला गुटे point that is your point 13 okay AP has reached its maximum point to point 13 now when you see in 4 units of labor whether 4 unit of labor रे देखो हमर TP बढ़ुची your TP is increasing and your MP is decreasing this is known as your point of inflection okay now what is point of inflection point of inflection माने कोन जो point रू हमर changes होबा start होउची हमर 4 units of labor परठू हमर second stage आरंभ हो जाउची this is the stage of change and that is why it is known as your point of inflection बुझा आसिला point of inflection के पचारले कोन कहबो मैम जो जगह रो चेंज आसुची when there is a subsequent amount of change has started to begin we call it as your point of inflection here your 4 units of labor पर to change होबा start हेची 4 unit of labor हमें जते ऐड करले ता परठू हमर चेंजेस आसीबा स्टार्ट हे गला so then that 4 units of labor is your point of inflection understood मैम बुझी एकी आसिला मैम 5 यूनिट ऑफ लेबर रो कमिची ना मैम 17 हेची कमिची 5 यूनिट रो 4 units of labor रो तोर रिलेटिवली कमिची ना केमती तोर कमिला 5 unit रो बुझबानी 18 टा तो 17 टा तो 18 टू बड़ ही मैम 5 यूनिट रे कमी गला 18 रो 17 हे गला कमी तो गला पॉइंट 4L तो स्टार्ट हला ना चेंज होबा यस मैम हम 4 यूनिट ऑफ चेंज तोर 18 टा 17 18 टा 17 टू बड़ ना कम रे मैम बड़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेउटू हबा जते बेले तमे चेंज देखिबा ऑब्जर्व करिबा स्टार्ट करिवो दैट इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मु कहूची फ्रॉम योर 4 यूनिट्स ऑफ लेबर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हबा स्टार्टेड माने कोन 4 यूनिट्स ऑफ लेबर टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हबा स्टार्ट एज माने ता परु टू स्टार्ट हबो ना कि सेउटू स्टार्ट हिजो ता परठू तो सेई तुम कुछ बुझिला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन if exam रे पढ़ला दी मार्क डेफिनेशन है you people can write it यस मैम okay now comes your second stage okay हमें फर्स्ट स्टेज रे एपी को फोकस करले बट एबे कोन हला हमर एपी भी कमुची एमपी भी कमुची सेकंड स्टेज रे एपी कमुची एपी एमपी पढुची कोडडे न दीटा को कमुची हम दीटांगो तो हमें जानी परिवानी एपी कोठी जाय कि मैक्सिमम रे पहुंचीबो सेहिति पई हमें एबे टीपी को फोकस करिबा
we will now focus on TP. Okay. Now, eight को सुमन पढ़ second stage to पढ़. And second stage is the stage of diminishing return. Here we can now not guess about from AP where to stop because here AP and MP both are decreasing. So we will start noticing TP in the second stage. That is when the labor came from 6L to 7L. Then TP came from 68 to 84, 7L to 8L. It came 84 to 88 and so on. We find TP is constant in 10L. Now when the 10th labor has joined the work, he is not being able to add anything to production. Thus after this point, production won't be able to rise or produce at as at 10L. TP has become maximum and MP is becoming 0. Okay, कौन बुझ रहे हो? We see that there is an increase in labor. ଆମର ଚାରି ପରଠୁ increase of labor ହେଇଯାଇଛି ନା କମି ଯାଇଛି? Yes, ma'am, increase. Now TP is also increasing at diminishing rate. TP भी ଆମର ବଢୁଛି but diminishing rate ରେ ବଢୁଛି. ठीक ଅଛି. Now your MP and AP both are decreasing. Okay, in your second stage, AP and MP both are decreasing, and your TP is increasing at a diminishing rate. बढ़ुची but इतने भी बढ़ुनी. It's on considerable level. Now ଆମର ଯେତେବେଳେ 6 unit of labor ନଉଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ 78 TP ଥିଲା. 7 unit of labor ନେଲେ ଆମ ପାଖରେ 84 ହେଲା. 8 unit of labor ନେଲେ 88 ହେଲା. 9 ନେଲେ 90 ହେଲା. 10 ନେଲେ 90 ହେଲା. Now ଏବେ 9 ରେ भी 90 ହେଲା. 10 ରେ भी 90 ହେଲା. What does this show? मैम आउ किछि इंक्रीज होउनी जेती को सेती के होइला तापर डिक्रीज हे चल छी. Okay, perfect. Now here we can see that your TP has reached its maximum and has become constant. एबे हमें 10 unit of labor add कर देला परे हमर TP टा आ बढ़ुनी सेमिति constant अछि. हमें खाली labor add करि चलछे. किंतु या परठु एते हमको आ किछि बढ़ुनी माने या परठु हमर किछि आउटपुट रे चेंज आसुनी आउटपुट हमर बढ़ुनी. So what is the फायदा माने what is the profit of hiring 10 unit of labor? हमें जो 10 नंबर लोकटा को हायर करले से ऐड हैला परे हमर TP total product is not increasing, it is constant. So what is the profit of hiring another unit of labor? ଆଉ ଗୋଟେ यूनिट ऑफ लेबर हमें हायर करके खाली कॉस्ट बढ़ाउचे कंपनी रो. वी आर नॉट एडिंग द प्रोडक्टिविटी काना हमर एठी कॉस्ट टा बढ़ुची ना नहीं एठी आउटपुट बढ़ुची की? No, ma'am. So this is a loss to company. Yes, ma'am. So here the second stage ends where the TP has reached its maximum point. Okay, TP पहुंची हमर स्ट्रेच हेई मैक्सिमम पॉइंट को पहुंची जाईची. या परे हमर प्रोडक्शन बढ़िबनी हमें लेबर ऐड करी चलली. We will go into negative stage, that is your stage of losses. Okay, बुझी आसिला second stage first stage? Yes, ma'am. Okay, मु कॉस्ट सारी देथिली तमरो भाबे कॉस्ट सर देथिला? No, ma'am. man टिके अधा रहितिला. अधा रहितला कोड रहितला एवरेज कॉस्ट. No, देखुची टिके. ठीक है, एंड ऑफ द क्लास में दिखा दो. Okay. Okay. Now we have reached the third stage. Okay. Now third stage, what is third stage? Third stage is your stage of losses. Negative stage or stage of losses. ଯେତେବେଳେ ଆମର TP constant ହେଇଗଲା ତା ପରେ ବି ଆମେ लेबर बढ़ेई चलचे किंतु TP देखला बेलକୁ कमी कमी चललेनी. आउ MP तो आसिकी माइनस रे पहुंचलेनी. AP माने MP has reached its 0 point. एबे TP जेतेबेले थिला एते गोटे लाइन थिला when TP has reached its maximum MP has become 0.
स्क्रीन रे देखो 0 अछि एमपी टीपी 10L रे 90 अछि एमपी बट यो सो टीपी बट एमपी इज योर 0 तापर नेगेटिव होबा स्टार्ट हलानी योर मार्जिनल प्रोडक्ट हैज गॉन टू नेगेटिव एपी कमिलानी एंड टीपी तो पूरा कमुची बट हमें लेबर ऐड ऑन करि चलचे जेतेबेले हमें लेबर ऐड ऑन करि चलचे हमर यूनिट ऑफ आउटपुट रे किछि फरक पडू नाही वी आर गोइंग इनटू ए नेगेटिव स्टेज in this point of time your farm or production will move into a negative stage where there will be only losses लॉस कौन पाई बिकॉज मु यूनिट ऑफ लोकों को हायर करी चलची किंतु मो पाखे बिजनेस नहीं मास शेष मते सैलरी नेबे नले बाडीबे जाले गोटे हबो ना नहीं मते घर द्वारा बिकी सैलरी देवा पड़िबो मु कोन घर द्वारा बिकी बोली बिजनेस स्टार्ट करथिली No, ma'am. तबे मते इने बिकिया पड़िबो माने कोन मु लॉस रे गली आई वेंट इनटू लॉस this is a stage of loss and I am going on negative so this is why it is known as stage of your negative return stage of your negative return this stage makes losses in this stage there are losses because additional labor are not increasing any production hence output is decreasing हमर fixed factor constant अछि variable factor हमें change करी चलछे फिर भी output रे किछि फरक पडुनी so it is the third stage of negative return बुझी आसिला Yes, ma'am. ग्राफ जो अछि बुझी आसिला Aଜ୍ଞା, ma'am. first stage is your increasing return second stage is your diminishing return third stage is your negative return okay now increasing return according to the definition did we justify the definition जहाँ थिला हमें illustration में से बुझिले ना कि अलगा बुझिले Yes, ma'am. okay now we will understand the relationship between AP and your MP okay AP माने कौन आंध्र प्रदेश MP माने कौन मध्य प्रदेश No, ma'am. और Ma'am, average product and marginal product. एटा visible होची ग्राफ टा ना बड़ करी Yes, ma'am. देखाउछ okay now see your AP is greater than your MP is your greater than AP increases ଯେତେବେଳେ MP होची AP2 बड़ा ସେତେବେଳେ AP ବଢୁଛି OE curve shows AP curve is below MP curve as AP is less than MP and MP is increasing हमरो OE curve टाको देखा एटा E रे E for elephant E okay now ଯେତେବେଳେ ଆମର MP greater ଅଛି when MP is greater माने कोन what do you understand when MP is greater ए ग्राफ रे मते के कहबे रो जे MP कोठी बड़ अछि मैम तार हायर स्टेज रे जोटी मैम बेसी ऊंचाई की हमरो OE कर्व टा MP कर्व तळे अछि ना नहीं यस मैम हमरो OE कर्व टा MP कर्व तळे अछि so Yes, your ma'am. AP is less than your MP कम अछि MP2 यस मैम सरला तो पाठ जति के कोन बुझा आसला फर्स्ट रिलेशनशिप यस मैम now your MP is first stage सा कोन मु कहली MP जेतेबेले बड़ अछि AP2 AP तळे अछि OE कर्व एटा देखछा OE पॉइंट AP तळे अछि MP2 तो हमरा AP टा बढुची but it's increasing ना एटा मिसिची के सिके मिसिनी ना
एपी टा हमर बढ़ुची तळे रहले भी कोन ला बट बढ़ुची सेत में लिखा है एपी इंक्रीजेस बुझी असला नेक्स्ट स्टेज इज योर एमपी इज इक्वल टू एपी एमपी इज इक्वल टू एपी को पॉइंट हबो मैम ई पॉइंट very good the point E shows that your MP is equal to AP at this point your AP is maximum a point रे हमर AP टा maximum अछि so in this point your marginal product and your average product is equal to same बुझे इसला यस मैम okay now your second हला एटा तो हमर थिला दीटा कंडीशन एबे सेकंड एबे थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन होची तमरो MP is less than AP MP is less than AP को पॉइंट है पॉइंट E पर है हमर MP टा नेगेटिव हे जाईची यस मैम बट AP टा बढ़ुची यस मैम okay now average product is increasing but your marginal product has turned to negative so this is the point where your MP is less than your AP बुझिसला यस मैम your MP can be 0 but your AP will never be 0 okay तमरे MP टा नेगेटिव रिटर्न हे परिबो जेमति मु एथरे देखैतिली MP को देखो 2 0 -2 -4 your MP can be negative but your AP will never be negative okay always remember that your MP will be negative but your AP is going to never be negative at point F MP has become negative but AP is always positive at point F your MP has become negative but AP is always positive understood यस मैम okay okay so I have prepared revenue but I think your average cost is there a little bit I guess so ना average cost ଅଛି ବୋଲି ତମର ଟିକେ ସାରିବା ପାଇଁ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସାରି ଦେଇଥିଲା ଭଳିଆ ହେଲାଣି ଟିକେ ଦେଖିକି ମତେ କହିଲେ ସୁମନ यस मैम मैम देखो ଟିକେ मैम रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट मैम सेठू अछि relationship between average cost और marginal cost ଯାଏ ପଢା ହେଇଛି मैम सेठू पढ़ा हबो relationship between average cost and marginal cost but I think the relationship between the marginal cost ଆଉ total cost ଅଛି ବୋଧେ course ରେ मैम बुक रे देछि तो मैम मु कहली मैम देखिनी मु सिलेबस देखिनी ଟିକେ syllabus check କଲୁ मैम सिलेबस तो देखी मैम सिलेबस देखी टोटल एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन एंड देयर रिलेशनशिप हाँ तो relationship between mu तमरो relationship between mu average cost ଟିକେ ରହ होची 2 सेकंड मैम तीनटार रिलेशनशिप देछि ତିନିଟା relationship ବୋଧେ ମୁଁ average କହିଥିଲି ତମକୁ यस मैम मैम तो तीनटार जो रिलेशनशिप आपण करथिले मैम सेटा टिके आउथरे कहि देबे मैम टिके ଏଇଟା ର मैम जो टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट तीनटार रिलेशनशिप से यो ग्राफ टा टिके कहि देबे 2 सेकंड total cost average cost marginal cost ना
कौन देची मो कौन बुक नथले मैम मु पिक पठे देबी नले बुक रो एवरेज और मार्जिनल I think तुम बुक रे मु पढिथिली बोधे तुम रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट अछि आई डोंट थिंक तुम तीनटा को अछि तो कोच तीनटा को अछि ओके गोटे काम करिया I will again go through the syllabus okay मु आउ थरे syllabus through रो जीबी okay I'll see मु कोठी तमरो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट रो तमरो बहुत डाउट रहउची मते भी डाउट है तुम कोर्स रे कोन कोन चिंता कर बुक में okay I मैम think we will मैम हाँ मैम मु वीडियो ऑन करछि मैम एठी मैम देछि जो सिलेबस मैम हाँ सेही सिलेबस टा मो पाखरे अछि तमरो एही सिलेबस मो पाखरे अछि हां ए But तीनटार रिलेशनशिप जो देछि okay ओके मते लागुच बट ता भितरे भी आउट के कंटेंट अछि दैट इज नॉट माने टोटल तमर रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट भी थिबो तमर रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट अछि नै आई एम डाउटफुल हम पढे देले किछ नै पढे देबी तम मनकर कोर्स न तो इट विल गो यस okay just do one thing today we will do we'll just start a little bit of revenue तमर revenue अछि बोले नेक्स्ट रे ओके Okay, we will start revenue in the next class. In the next class, I will contact you, Suman. Okay. हमें मैम relationship between तो कोच SC and MC and TC to start करो, right? So, यस Mokta, I मैम need to go through your syllabus.